सो जो आज फर्स्ट टाइम ज्वाइन कर रहे हैं, जस्ट टू recap. So we have studied why the hidden mortal, why the name of the book is hidden immortal, because Hanumanji is hidden inside us in the Sushumna. Sushumna, as most of us know, is a central meridian, which when our consciousness is in the Sushumna Nadi, that is when we are connected to the divine. Otherwise, also we are connected to the divine all the time, but when we are a consciousness is in Ida or Pingla, that time we are more connected to the materialistic world, to the outer world. But when we are in the Sushumna Nadi, when our Sushumna Nadi is flowing, that time we are we are directly connected to the divine. And one more thing, अभी कैसे पता चले कि हम सुषुम्ना में हैं या हम ईड़ा में हैं, हम यहाँ पिंगला में हैं? So when you check your nostrils like this, and you breathe in and breathe in and out. As you breathe in, then breathe out with little pressure. So जहां पर जिस हाथ में आपको प्रेशर एयर का फील हो रहा है, that side of nostril is active. If it is left side, then Ida is active. If it is right side, then Pingla is active. But if the breath is coming simultaneously from both the nostril in equal flow, that is when Sushumna Nadi is flowing. So Ida has different purpose, Pingla has different purpose, and Sushumna has different purpose. So Sushumna Nadi जब हमारी एक्टिव होती है, that time हम लोग सिर्फ और सिर्फ साधना कर सकते हैं. That time we should not do any other materialistic thing. कोई भी थॉट जब उस टाइम पे आता है तो वो मैनिफेस्ट नहीं हो पाता है. कोई भी थॉट उस टाइम पर जो आता है मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के लिए, वो उसका फल नहीं मिलता है. से फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव है और उस टाइम पे आपने ये सोचा कि मैं ये काम शुरू करती हूँ, या तो वो काम कभी भी मैनिफेस्ट नहीं हो पाएगा, उसमें प्रॉब्लम्स आ जाएंगी. ओके, सो सुषुम्ना नाड़ी, लेट मी रीड द प्रॉपर क्वेश्चन. गिव मी 1 minute. Please clear if Sushumna is 8 minute. Not able to read your question. Can I read it? Yeah, please. Ma'am, please clear if Sushumna is continuously active for some hours. So is this a reason for early death or disease? Yes. If Sushumna Nadi is continuously active, that is the indication of something not so good happening, that is going to happen in your near future. अगर सुषुम्ना नाड़ी कुछ टाइम के लिए या कुछ दिन के लिए रेगुलरली एक्टिव रहती है, दैट इज द इंडिकेशन ऑफ डेथ ऑल्सो, एंड दैट इज द इंडिकेशन ऑफ not so good, something, some not so good event going to happen in your life. Say for example, if your Sushumna Nadi is active and you go out of the house in your Sushumna Nadi, so we may face some accidents और डिलेज, एक्सेस डिलेज, 2 घंटे ट्रैफिक जाम में फंस जाना, या कुछ किसी से रास्ते में जाके लड़ाई हो जाना. सो ये सब मैनिफेस्ट होते हैं सुषुम्ना नाड़ी में. इसीलिए जब हम सुषुम्ना नाड़ी होती है, कभी भी हम लोग घर से बाहर नहीं निकलते हैं. वी वेट फॉर द नाड़ी टू चेंज, और वी कैन चेंज द नाड़ी ऑन आवर ओन विल. तो नाड़ी चेंज करके फिर हम निकलते हैं. तभी कहते हैं ना, जब हमारे एक सुपरस्टिशन है कि जब छींक आती है तो यू शुड नॉट, घर से बाहर नहीं जाना. तो नॉर्मली अगर कोई कफ एंड कोल्ड नहीं है और किसी को छींक आती है, वो इसलिए आती है क्योंकि अगर आपकी जो नाड़ी है वो ईड़ा से पिंगला में जा रही है या पिंगला से ईड़ा में जा रही है, तो जब वो शिफ्ट होती है तो एनर्जी के वो जो एक्सचेंज होता है, उसके यहाँ पर कुछ आपके कुछ एनर्जी का मूवमेंट होता है. उसके कारण समटाइम्स भी स्नीज. तो वो जो स्नीजिंग होती है, इसीलिए वो कहते हैं कि जब छींक आ गई है तो मत जाओ घर से, क्योंकि उस टाइम पे हो सकता है सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव हो. तो you just check it. If it is Sushumna, wait for some time, let it change to Ida, either Ida or Pingla, and then move out of the house. Right? There is one more question. हाँ जी. Anu Gupta Mittal ji का है. Ma'am, my Pingla is maximum time active
and I always have high BP problem. Is there So this is any the reason you relation? have high BP. This is the reason you have high BP. So if you can control the shift of your nadis alternatively every hour, like 1 hour Ida, 1 hour Pingla, then Pingla, then Ida, and then Pingla, then आपके जो ये है आपका हाई बीपी ये नॉर्मलाइज हो जाएगा. ठीक है अनु जी. मैम हाँ जी. नमस्ते मैम. आत्मा नमस्ते. मैम मेरा एक क्वेश्चन था. मैम मोस्टली मेरी नोज जल के फ्रंट में और जहाँ पे नोज रिंग है वहां पे बहुत इचिंग होती है. मतलब बेमतलब इचिंग होगी. कहीं बाहर चले जाओ. इसके देखिए बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, बट व्हेन वी आर ऑन द स्पिरिचुअल पाथ तो नॉर्मली इसका मीनिंग होता है कि सम some presence of some devatas around us. पर मैम ये बहुत पहले से है. हाँ तो बहुत पहले से भी हो सकता और यहाँ है. पे जहाँ पे बिंदी लगाते थे, मतलब हस्बैंड की डेथ होने तक, तो यहाँ पे बहुत इचिंग होती थी. अब जब से वो नहीं है तो यहाँ तो नहीं होती, पर ये इचिंग मुझे होती है. आप अपने ना कुछ देर साइकोथेरेपी कर लो तो जस्ट सील द क्रैक्स एंड होल्स इन द आज्ञा चक्र. Okay. हाँ मैम जी नॉस्टल शैला. हाँ जी नॉस्ट्रल क्या. मैम जो इचिंग यहाँ पे होती है नोज रिंग पे हाँ और दैट इज द प्रेजेंस ऑफ हायर बीइंग्स. Just say I recognize your presence. I know you are there. Thank you for being in my life. ओके मैम थैंक्स. That is a blessing basically. हाँ जी शैला. आत्मा नमस्ते मैम. आत्मा नमस्ते. अभी अभी आपने जो छींक का ये बताया तो मुझे रोज सुबह में बहुत छींकें आती है. 5-6 बार आती है और फिर बाद में बंद हो जाती है. Okay, that can be some allergy also, or that may be your shift of nadi also. You can check now. So जब छींक आ रही है तो कौन सी नाड़ी चल रही है, and then जब छींक आ रही है, I mean during that, if it is Sushumna, or immediately if you can change to Pingla or Ida, then वो you'll be able to make it out. ओके मैम थैंक यू. How can we change it from Sushumna intentionally? Okay, so if you have like say Sushumna chal rahi hai and you want to shift it to Ida, right? So what you have to do is you just keep your palm like this fist like this and then put it under your right armpit. जब आप राइट को क्लोज कर लोगे, राइट को प्रेशर यहाँ हल्का सा दोगे तो लेफ्ट विल स्टार्ट फ्लोइंग. एंड अगर आपको राइट स्टार्ट करनी है तो राइट फिस्ट को बंद करके लेफ्ट आर्मपिट के अंदर रख लोगे तो राइट विल स्टार्ट फ्लोइंग. राइट, दिस इज द वे यू कैन शिफ्ट. मैम सोने के टाइम कौन सी एक्टिव होनी चाहिए? लेफ्ट वाली ना? पिंगला पिंगला राइट वाली. राइट वाली. जी. ओके थैंक यू. जिन मतलब फिर वही दूसरे ऑपोजिट पार्ट. आप अगर अपनी लेफ्ट साइड टर्न करके सोएंगे, राइट साइड आपकी ऊपर रहेगी तो ऑटोमेटिकली आपकी राइट साइड एक्टिव हो जाएगी, पिंगला एक्टिव हो जाएगी. दिस इज अनदर वे. अगर आपको लेफ्ट एक्टिव करनी है तो आप राइट साइड के साइड पे सो जाएंगे तो आपकी लेफ्ट एक्टिव हो जाएगी. नहीं पर नींद तो तभी आएगी, आप बोल रहे हो कि राइट वाली एक्टिव होएगी था. नींद कई बार तो लेफ्ट में भी आ जाती है, डिपेंड करता है हमारे बॉडी का वो, बट इट इज गुड इफ यू स्लीप इन राइट नाड़ी एक्टर. थैंक यू. Shall we move forward now? All questions cleared? Ma'am, I have a question. Can I answer? Thank you, Tushar. आत्मा नमस्ते मैम. आत्मा नमस्ते. मैम आपने कहा कि सोते हुए पिंगला एक्टिवेट होने चाहिए, लेकिन सोते हुए तो हमें थोड़ा स्लो डाउन और रिलैक्स होके सोना होता है, तो shouldn't it be Basically it done? is for balancing because at night moon energy is more active. Right, तो मून वहां पे ईड़ा की एनर्जी ऑलरेडी है, तो ईड़ा इज मून एनर्जी. सो मून एनर्जी, ईड़ा की एनर्जी इज ऑलरेडी देयर, अ लॉट ऑफ इट. right, So right. then
हाँ, तो जब हम पिंगला करके सोते हैं देन वो हमें बैलेंस कर देता है बेसिकली। ओके, राइट, थैंक यू मैम। Descent, coming back to the book, page number is 8. The Descent from Apsara to Vanar. The traditions that describe Anjana's previous life as a celestial Apsara also preserve the account of how she came to take birth in the form of a Vanar, the monkey-like forest beings. In the most widely circulated version, her descent occurred thus in her celestial life as the Apsara Punjikasthala, as she is named in some texts. She was traversing the sky one day in her divine form, moving with the grace of a being who has never known restriction. Below her in the forest clearing sat a great rishi in the deep samadhi, his body absolutely still, his consciousness expanded far beyond the physical, his awareness merged with the infinite. Punjikasthala, in the carelessness of one who has lived too long in the ease of the celestial world, disturbed the sage's meditation, perhaps by creating the wind with her passage, perhaps by the inadvertent magic Okay, so go ahead. Yeah. that radiates from a celestial being moving through the world of matter. The sage samadhi was broken. He opened his eyes with specific annoyance of a being of concentrated spiritual power interrupted at the most crucial moment of their inward journey. He looked at her, his eyes fresh from the state in which all the things were seen as they truly are, saw not only her current thoughtlessness, but the accumulated patterns of her celestial existence, the attachment to beauty, to the pleasures of divine realm, to the ease of a life without consequence. And he spoke the curse. She would take birth on the earth in the form of a Vanar woman, losing the beauty and the freedom of her celestial form, dwelling in the world of effort and limitation and grief. The curse would lift. Curses from great rishis always carry within them the seed of liberation. When she gave birth to a son who would be an incarnation of Shiva himself, Punjikasthala heard the curse, accepted it with understanding that what great rishis speak is never merely a punishment, but always a direction, and descended to the earth. She was born as Anjana, first as the daughter of Ahilya and Gautam, with all that heritage implied, and then into the world of Vanras, carrying in her human monkey form the full weight of wealth of everything she had lived through. So whenever we get a curse, see the prarabdha, the karmas that we are carrying in this lifetime is also in a way a curse of the karmas we have done in our past lives. So वो जो curses हैं, जो हमारे challenges of life we face in our daily lives, the people around us, the difficult relationships, financial issues, physical issues. What are these problems? This is not a punishment. This is the clearance of some, prarabdha, the karmas that we have already done in our past lives. So हमारे parents कैसे हैं, हमारे relatives कैसे हैं, तो ये सब क्या है, ये एक outcome है of what we have done in our past lives. So there's a way we can, in it's a part of astrology. Usme we can know like what negative karmas we have done in our past lives. So when we studied our past lives, so then I realized, okay, that means whatever these challenges, whatever they are coming in my life, they are the outcome of my past life karmas. So again, when we take birth in this lifetime and we meet difficult people around, we face some challenges in our life. That is the clearance of that problem, that challenge, that karma that I had done in my past life. So same way, this is what here it is written. Punishment.
what great rishis speak is never merely a punishment but always direction. So यहाँ पर तो उनको एक महर्षि ने कर्स दिया था, बट हमारी लाइफ में जो कर्सेस हमें बाकी लोगों ने दिए होंगे, हमने किसी को तंग किया होगा, उनका कर्स हुआ होगा, सो वो भी कहीं ना कहीं अंदर से वो जो इतना निकला होगा, तो उसका आउटकम है आज के हमारे ये जो हमारे लाइफ के जो एक्सपीरियंसेस हम करते हैं, जो इवेंट्स होते हैं हमारी लाइफ में। तो इसलिए सो वट एवर इज कमिंग, लेट अस एक्सेप्ट ऑल दोज चैलेंजेस very gracefully. Let us go through our life, whatever is there, without cribbing, वो मेरे relatives ऐसे क्यों हैं, मेरे को husband ऐसा क्यों मिला है, मुझे parents ऐसे क्यों मिले हैं, we have chosen them. Because अगर हम उनको चूज नहीं करेंगे तो हमारे कर्मास कभी भी न्यूट्रलाइज नहीं होंगे. Sometimes we live with people who are very difficult. उनके साथ रहना मुश्किल होता है, बट अगर हम ये अंडरस्टैंड करके चलेंगे कि जो ये जो मेरी लाइफ में ये जो हम रिलेटिव्स मिले हैं, ये जो रिलेशनशिप डिफिकल्ट आ रहे हैं, मेरी एक प्यूरिफिकेशन हो रही है, माय सोल इज गेटिंग प्यूरिफाइड, सो देन यू विल बी वेरी हैप्पीली, you will be able to accept those relationships as they are, and we can never expect them to change. वो change नहीं होंगे because they are teaching us a lesson. What we need to do is we need to purify ourselves, and there are different ways to purify yourself. You are, most of you are pranic healers, some of you are this swar yogis, right? So हम लोगों के पास different तरीके हैं. swar yogis क्या करेंगे? swar yogis अपनी alignments करेंगे morning, evening, midday में, देन चक्र शुद्धि करेंगे, देन तत्वों को अलाइन करेंगे, अपनी नाड़ियों को अलाइन करेंगे. अरहाटिक योगीज क्या करेंगे? अरहाटिक योगीज अपनी अरहाटिक प्रैक्टिसेस करेंगे, हम टू हार्ट्स मेडिटेशन करेंगे, अपनी हीलिंग करेंगे, अपनी साइकोथेरेपी करेंगे. एंड अगेन वी नो हाउ टू कट आवर कॉर्ड्स, ऑल द प्राणिक हीलर्स. सो डू योर हीलिंग्स, राइट? सो दिस वे हम लोग की जो जर्नी है दैट बिकम्स इजियर. Then is tapasya, calling God down through fire. Years passed. Anjana grew into a young Vana woman of breathtaking beauty and profound inner depth. So basically, she was not, she never looked like a monkey, but she lived a life of a monkey. She lived not a monkey, sorry, a Vanar. So उनको थोड़ा कई बार monkey बोला जाता है, but basically they were Vanar, they were like Adivasi, right? By now, she had been taken by the Vanar community. Some traditions say that by the Vanar king Kunjara, who became her foster father and whose daughter she became in this life. She learned the ways of the Vanaras, lived in the forest, and carried always within her the double inheritance of the celestial origin and earthly suffering. Then came the day when the longing that had been her companion since childhood, first for her stone mother, then for her absent father, then for the rishis who had told her of her true nature, crystallized into something specific and overwhelming. She wanted a son, not an ordinary son. She had seen her in her childhood what ordinary parenthood looked like when it crumbled. She wanted a son who would never be abandoned, never be lost, never be separated from the divine. अब देखो, उनको हनुमान जी की जैसा पुत्र पैदा होना था. That is why she had to experience that life, कि उसके पेरेंट्स ने उनको अबंडन कर दिया. तो तभी उनके अंदर ये फीलिंग आई कि नहीं, मुझे ऐसा बेटा चाहिए है जो कि जिसको कभी कोई दुख ना हो, जिसको कोई अबंडन ना कर सके, जिसको कोई कर्ज नहीं मिले, जो जो ऐसी लाइफ नहीं जिए. सो दैट इज हाउ हमारी लाइफ में भी, जब हमारे लाइफ के एक्सपीरियंस हो, वी हैव टू कनेक्ट आवर सेल्स टू द स्टोरी. तो हमारी लाइफ में भी जो ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं, वो क्या करती हैं, हमारी पर्सनालिटी को ऐसा बना देती है. ओके, मेरा चाइल्डहुड ऐसा रहा है, मैं अपने बच्चे का चाइल्डहुड ऐसा नहीं रहूं. मेरे को ये नहीं मिला, आई विल गिव माई बच्चा एवरीथिंग दैट ही नीड्स, राइट? सो दीज आर द मॉरल्स फ्रॉम दीज स्टोरीज. She wanted a son who would never be abandoned, never be lost, never be separated from the divine. She wanted a son who was himself the divine, who carried God inside him so completely that nothing in these three worlds could ever take that away. She climbed to the peak of the Anjaneri mountain, the mountain that would carry her name for all the time.
and she began her tapasya. So she began to meditate there. The tapasya of Anjana is one of the most intense in all of the Puranic literature. She stood on one foot for days. She ate nothing. She drank only water, caught in the cup of her palms from the rain. So she would meditate like this on and standing on one foot. So whatever water she would gather in her palms when it was raining, that wahi pani piti thi bas. This was her food. She stood with one arm raised to the sky in total surrender, the universal gesture of one who has set down the last defense and offers themselves completely. She called to Shiva, she called to Vayu, she called to every form of the divine she had ever heard name. She wept and prayed and stood and wept and prayed. The forest around her fell silent. The animals came and sat near her in respect. Even the trees bent slightly towards her in the wind, as though listening. She prayed for a child who would never be separated from the divine. She prayed for a son whose entire existence would be one act of devotion. She prayed in the deepest possible sense for what she herself had never had, absolute, unbreakable belonging. So see how the divine works. उधर से तैयारी हो रही है कि रावण को कैसे खत्म किया जाए, और उधर से तैयारी हो रही है कि हनुमान जी को कैसे, शिव जी को हनुमान जी का अंश अवतार बन के कैसे धरती पर आना है. सो ये जो तैयारियां हैं, इट टेक्स थाउजेंड्स ऑफ इयर्स. सेम थिंग हैपेंस विद अस. जो हमारी जर्नी है ऑन द स्पिरिचुअल पाथ, हमारे जो अंदर के, हमने अपने अंदर के रावण को मारना है, उसमें भी इट टेक्स इयर्स, इट मे टेक लाइफ टाइम्स, बिकॉज one by one this thing happens. And if we are talking about this, so maybe our Hanuman, either he has taken birth or he is about to take birth. Okay? She stood on that mountain and called God down into the world with the one prayer that is always answered. The prayer born not from ambition or fear, but from the deeper wound of love. So she was actually, very hurt inside because she lived an abundant life. So who abandoned her? Her father abandoned her. So that was the circle of life that had to happen because Hanuman had to take birth out of her. Then is Kesari, the worthy father found. Before the divine response came, life moved in its own way. Anjana came to the attention of the great Vanar king Kesari. His name means the lion man one. And he was every bit as magnificent as his name suggests, the Vanar of enormous stature and physical power, of great dharmic integrity, fearless in battle, wise in governance, and possessed of that rare quality in powerful men, genuine humility before the divine. Kesari had heard of the beautiful Anjana who lived in the forest and whose spiritual power was already the subject of conversation among the sages of the region. He came to see her, and when he saw her, the daughter of Ahilya's beauty, the eyes that had been weeping and praying for years, the strength of a woman who had survived what she had survived and emerged not bitter but blazing, he knew immediately that this was the woman he had been waiting for. Their marriage was celebrated with great ceremony among the Vanar clan. But Anjana did not stop her tapasya after marriage. If anything, she intensified it. She had a husband now, a worthy, powerful, loving husband, but the specific longing that drove her prayers had not been answered. She wanted the divine child. She wanted the son who would be God. In one of the most moving accounts preserved in the Skand Puran, Kesari accompanied his wife to the mountain peak for her prayers, sitting near her through nights and storms, not understanding entirely what she prayed for, but understanding that it was real and urgent and beyond his powers to provide. He was the father in waiting, already giving everything he could give
already offering his presence and his love, already receiving the child who would one day bear his name, Kesari Nandan, but not yet knowing it. He was patience. He was patient and faithful. I think there's a mistake. His patience and faithfulness made flesh, sitting in the wind beside the praying wife. Pen देना है, माफ कर दो. Make the corrections. So he was the father who was waiting for a child. He actually did not know who is about to come. But he was like helping Anjana in her meditations. He would sit there. So this is how, again, he was a blessing for Anjana. तो जो जो उन्होंने तपस्या की थी, उसका जो रिजल्ट था, the great person as a husband. Then is the cosmic convergence, Shiva, Vayu, and the sacred Payasam. Meanwhile, अब इधर ये हो रहा है, अब उधर अयोध्या में क्या हो रहा है, ठीक है? Meanwhile, in Ayodhya, the great king Dashrath, sonless after decades of marriage, was preparing for Putra Kameshti Yagya, the supreme fire ritual for obtaining children. The sage Rishi Angira the Angira Rishi, he is one of the Sapta Rishis. He did that yagya, right? So the sage Rishi Angira presided. The fire blazed for days, reaching into the celestial realms. At the culmination of the yagna, a divine being, Agni Devta, in some accounts a yaksh or a celestial emissary, in others, arose from the sacred fire, holding a golden vessel of divine kheer, the sacred payasam, the sweet rice pudding of the gods. So kheer, basically, जिसको हम पंजाबी में बोलते हैं. He offered it to Dashrath with the command, "Give this to your wives, and you shall have sons." Dashrath gave largest portion to the eldest queen Kaushalya, a smaller portion to Kaikeyi, and the remainder to Sumitra. These three portions would become Ram, Bharat, and the twins Lakshman and Shatrughan. The four sons of Dashrath, the four pillars of the greatest story ever told. But before the distribution was complete, in the moment of transition between the sacred fire and the human hands, a kite, a sharp-eyed and swift as ambition, dove from the sky and snatched a portion of the divine payasam. तो क्या किया? There was a bird who just came और उसमें से थोड़ा सा payasam उठाया and it flew. It rose into the air, the golden vessel clutched in its talons, and the sacred food steaming with divine power and flew. Vayu, who is everywhere because he is the breath in every living thing, because he is the space between all atoms, because he moves through the skin of the world like thought moves through the mind, saw what the kite carried. He saw it with the knowledge of what it was and what it was for. He felt with the awareness of a cosmic being, the woman on the mountains who had been praying for years, whose prayer had been heard in the highest realms, and who was at this very moment standing on the Anjaneri peak with her palms open to sky. तो वो क्या था कि actually this was requested by all the devatas and also by the Lord Shiva कि आपको वायु देवता आपको जाना है और ये जो काइट है, ये जो बर्ड है, इसके थ्रू इसको फ्लाई करना है और अंजनी के हाथों में देना है. The kite buffet by the sudden impossible gust of sacred wind lost its grip. The portion of divine payasam fell from the sky and the wind. Vayu himself caught it and carried it in its invisible hands gently with infinite care across the miles of air between Ayodhya and Anjaneri and placed it softly into the turned worshipping, waiting palms of Anjana. She opened her eyes. There in her hands was a golden vessel she had never seen before, warm as a human heart,
fragrant with a scent that was not of this world, glowing with a light that was not the sun. She did not know where it had come from. She did not ask. Some gifts you receive with questions, some gifts you receive with your eyes closed and your whole self open. Anjana consumed the divine payasam with complete faith, and in doing so, received the essence of Shiva carried by the touch of Vayu, born from the fire of Dashrath's yajna, ordained by Brahma's blessings, blessed by all the gods. She had been waiting for years, calling God down from the sky. God has arrived. Not in the thunder and lightning, not in the dramatic epiphany she might have imagined, but in the quiet descent of a golden vessel into open hands. The divine arrives not when we demand it, not when we have made ourselves worthy by our own calculation, but when the combination of our longing and the universe's readiness creates the exact moment that was always going to happen. So this is the gist of our life, these lines. आप मांगते जाओ, मांगते जाओ, मांगते जाओ. बट जब वो कॉम्बिनेशन बनेगा, जब वो हमारा जो तपस्या है वो पूरी होगी, उसका फल तो हमें तभी मिलेगा. एंड वी नीड टू कीप पेशेंस. We need to have lot of devotion. This is what Sai Baba says, Shraddha Saburi. So, lot of patience is required. And this is when you need something very divine in your life, when you need something, that you have been longing for since your lifetimes. So, उतनी ही तपस्या करनी पड़ेगी, उतना ही आपको अपने कर्मों को न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा. And then there will be that particular moment, that right moment, वो जब सारा कॉम्बिनेशन बनेगा, उधर से दशरथ का वो पुत्र कमिष्ठी यज्ञ हो रहा है, उधर से वायु देवता आए, उधर से शिव भगवान ने उनको बोला, सो वो सब उठा के लेके आ रहे हैं, वो वायु के वेग से उनके हाथों में गिरता है, बिकॉज शी हैज बिन मेडिटेटिंग लाइक दिस. सो उनके एंड शी नेवर आंसर्ड क्वेश्चन कि ये क्या आया है. प्रसाद समझा, बिकॉज शी हैड लॉट ऑफ फेथ. She had lot of belief. उसको अपनी तपस्या पे विश्वास था. So she just consumed it. And that is when Hanumanji was conceived. She had prayed for the divine to enter her life. She had not specified how, and the divine, as it always does, when the heart is truly open, arrived in the form she had not imagined, from a direction she had not been watching, in a moment that was simultaneously surprising and utterly inevitable. So this is what happens with us. हम मांगते रहते हैं, अच्छा ये होगा, पता नहीं ये होगा, पता नहीं, बट जो वो होता है ना, तब हमने कभी सोचा भी नहीं होता. When we get something, जब हमारी लाइफ में एक ब्लेसिंग आती है, तो कैसे भी आ जाती है. फिर कई बार क्या होता है कि हम लोग को लगता है कि हमारी लाइफ में एक मेजर इशू आ गया, मेजर प्रॉब्लम आ गई, है ना. लेकिन वो मेजर प्रॉब्लम जो होती है, वो मेजर अब वो हंस रहे हैं. सो सब अपने अपने रिलेट कर रहे हैं. तो व्हेन अ ब्लेसिंग कम्स इन आवर लाइफ, उससे पहले लाइफ में बहुत टर्मोइल चल रहा होता है. कैसे वो तपस्या, वो क्योंकि वो जो टर्मोइल है ना, वो हमारी तपस्या चल रही. तो हम भी हम अपने अंजनेरी पर्वत पे बैठे अपनी तपस्या कर रहे होते हैं. एंड देन द राइट टाइम कम्स, वो एक कॉम्बिनेशन बनता है ऑफ सम इवेंट्स, एंड देन आयासान कब हमारे हाथ में आ जाता है और कब हम उसको कंज्यूम कर लेते हैं विद फेथ. सो यहाँ से क्या मिलता है, कौन कोई बात नहीं करता. So this is what actually happens with us also. So we have to wait for the right time to come and carry on with your karma, whatever you're doing. If it is your tapasya, जरूरी नहीं आप अपने एक्चुअली में अजनेरी पर्वत पे बैठे और वहां हाथ ऊपर करके बैठे हुए हैं और आपको ऐसे हाथ खड़ा करके ही एक टांग पे खड़े होकर ही तपस्या करनी है. जो आप अपने रिश्तेदारों को झेल रहे हो, जो आप अपने फाइनेंशियल इश्यूज को झेल रहे हो, जो आप अपनी फिजिकल प्रॉब्लम्स को झेल रहे हो, वो भी एक तपस्या ही है एक तरह से. और एक दिन ऐसा होगा, फिजिकल इश्यूज है, एक दिन ऐसा होगा, कोई ऐसा डॉक्टर आएगा, आपको दवाई देगा, आप फटाफट से ठीक हो जाओगे, बिकॉज दैट इज द राइट टाइम. एंड वी हैव टू वेट फॉर द राइट टाइम टू कम विद लॉट ऑफ पेशेंस, with lot of belief and faith, right? And this is when Hanumanji will be born within us, through us. The night that
changed. So the birth, अब हनुमान जी का birth हो रहा है. The months that followed Anjana's receiving of the divine Payasan were unlike her pregnancy that had ever been recorded in the Vanar clans. The mountains on which she had prayed seems to come alive around her. Flowers bloomed um, out of season. So अब पतझड़ में भी फूल खिल रहे हैं. ठीक है. ऑटम में भी क्या पत्ते झड़ नहीं रहे, हरे हरे पत्ते हो रहे हैं, क्योंकि भगवान आने वाले हैं, खुद जन्म लेने वाले हैं. Springs of water appeared where no water had been before. The animals of the forest gathered each evening near the cave where she rested, sitting in quiet circles as though keep watching. The sages who visited reported feeling an unusual stillness in the air near her, a quality of the atmosphere that they recognized from their deepest meditations, the peace that descends when the divine is near. Anjana herself moved through those months in a state that was not quite of this world. She was more awake than she had ever been and simultaneously more peaceful. The wound of her childhood, the stone mother, the absent father, the long years of longing did not disappear, but it transformed. Grief, when it is fully lived through rather than avoided, does not harden into bitterness, it softens into compassion. Anjana's years of abandonment had opened her heart to a width and depth that few beings achieve. And now that heart was home, being prepared for the greatest soul ever to take birth in the mortal realm. The birth came at dawn, not the tentative pre-dawn when the darkness still debates with the light, but the specific moment when the sun's upper rim first clears the horizon, and then the first true ray of the day strikes the world. The Brahma Muhurat, the Creator's hour, when the veil between the celestial and the earthly is at its thinnest, and the gods can most easily pass through. He did not cry. Every baby cries. It is the first great protest of the consciousness, suddenly enclosed in the body, suddenly blind and bound after the freedom of the divine realm. Hanuman did not cry. He opened his eyes that even at birth blazed with a light that made Anjana shade her own. And he laughed, not the unfocused, reflexive response of a newborn, but a laugh of recognition. Here I am. तो उन्होंने कहा कि मैं आ गया हूँ, आ गए हम. So here it is. This is the world where Ram will talk. His body glowed like molten gold. So he is Kanchan Varna. तो हम कहते हैं ना कंचन वरण विराज सुबेसा. So he was born as like he was so bright. His aura was so bright. In a way, we can say he had golden energies the moment he was born. The golden complexion that Hanuman Chalisa describes. He was enormous for a newborn, filling Anjana's arm almost beyond her capacity to hold him. His small fists clenched with a latent strength that she could feel even at the first embrace. When he breathed, when the Vayu's own prana filled his lungs for the first time, the mountain trembled. The sound of the first breath was heard by those with ears sensitive enough at the first syllable of the name Ra. In the heavens, the gods who had been holding their breath since the beginning of Anjana's tapasya finally exhaled. Brahma smiled. Vishnu, in his eternal abode felt the arrival of the one who would serve his coming incarnation as Ram. Shiva, whose essence had descended into this form, who had desired to serve Vishnu through this birth, felt the particular joy of a consciousness that has just found the perfect vehicle for its most beloved purpose. And Vayu Devta, the wind god, whose breath had carried the divine Payasam, whose essence was in every cell of his blazing infant, who was in the truest sense this child's father, moved through the world differently on that morning. So he was very happy.
Every leaf that stirred, every cloud that shifted, every flame that bent in the wind was Vayu's celebration. His son had arrived. Flowers fell from the sky, not the polite celestial rain of a standard auspicious event, but a torrent, a cascading abundance, a downpour of every flower that exists in every realm of creation. The Gandharvas sang, the Apsaras danced, the rishis in their mountain hermitages who had felt the shift in the cosmic field folded their hands in the direction of Anjaneri and bowed. Anjana held her son, this blazing, golden, laughing, impossible child, and felt for the first time in her life that nothing was missing. The stone mother, the absent father, the long years of silent ashram, the ache of the unanswered prayer, the decades of tapasya on the mountain peak, all of it had been preparing for this specific weight in her arms, this specific light in her arms, this specific face looked up at her with eyes that already contained the whole universe. She wept, not with grief. She had done enough of that to last many lifetimes, but with a specific weeping of one who has been given back everything that has given up hoping for. Her wound had become his birthplace, her abandonment had become his arrival. What the universe had broken in her, it had used those very breaks to let in a light greater than she had ever imagined. She named him, she called him Anjaneya, her own, the son of Anjana, whatever else the world would call him, Vayuputra, Kesari Nandan, Shankar Suvan, Mahavir, Bajrang Bali, she would also always know him by his first name, mine. Anjane means the one who belongs to Anjana. So he had many names. So the four names, a theology of divine parentage. Okay, before we move forward, anybody has any question? So who all are mothers here who have kids? So जब हम ये पढ़ रहे थे, क्या आपको सबको अपना वो टाइम याद आया था जब आपके बेबीज हुए थे? Yes. So see, हमारे हमारे बच्चे हम लोग को भी ऐसे कि हाँ मेरे हाथ में मेरा बच्चा आ गया, मेरे सारे दुख कट गए. No, so we as mothers we all had that feeling. So just Ritu is saying, just imagine Anjana ने कितनी तपस्या की थी उनको पाने के लिए. So उनकी क्या फीलिंग रही होगी. सो जब हमारी प्रेयर्स आंसर होती हैं, जब हम लोग इतनी तपस्या करके किसी एक चीज को पाते हैं, सो वो जो फीलिंग है टू गेट इट, एंड दैट इज नॉट ओवरवेलमिंग बेसिकली, दैट इज मोर ऑफ, मुझे लगता है कि जब व्हेन वी लॉन्ग फॉर सम व्हेन वी हैव अ लॉट ऑफ लॉन्गिंग फॉर समथिंग, और जब वो हमें मिल जाता है ना, तो ओवरवेलमिंग की बजाय हम लोगों के अंदर एक बहुत इनर सेटिस्फेक्शन और डीप एक वो कंटेंटमेंट की फीलिंग आती है. So this is what I feel Anjana must be feeling. क्योंकि जो इतनी तपस्या से जो मिला होता है ना, कभी उसका प्राइड नहीं होता है, उससे हम और ज्यादा हम्बल्ड फील करते हैं, मोर ग्रेटिट्यूड, मोर ग्रेटफुल, more humility inside us. We are more humble. So these are the teachings, these are the lessons we have to learn from these scriptures. Okay? So ये अंजना के जो हनुमान जी पैदा हो रहे हैं, ये हम सबके अंदर ये this happens in our lives. This is happening all the time in our lives, and this happened with us as the soul also. So ये जो जर्नी है, ये हमारी सोल की जर्नी है. तो कैसे हमारे जो प्राण है वो कैसे जन्मे, हमारे अंदर के सांस कैसे जन्मे एज अ सोल. सो दिस इज द स्टोरी ऑफ दैट. जैसे मैंने बोला था कि यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, तो जो ब्रह्मांड में हो रहा है, सो वी आर ब्रह्मांड इन आवर ओन सेल्स, वी आर कंप्लीट सृष्टि इन आवर ओन सेल्स. So the way the universe has solar systems, like the galaxies,
So we also have a solar system inside us. So our chakras are our different planets. So in a way, we can say that the Earth or the solar system, these different planets are the chakras of the solar system. And solar plexus, the solar system is one of the chakras of our galaxy. And our galaxy is one of the chakras of our universe. And our universe is maybe one of the chakras of the multi-universe. राइट सो दिस इज हाउ उसका आप कहो कि उसका एक मिनिएचर फॉर्म जो है वो आता जाता है एंड वी आर द यूनिवर्स इन आवर ओन सेल्स तो ये सब जो यूनिवर्स में हुआ था उस टाइम पर ये हमारे अंदर भी हो रहा है दैट इज वाई मैंने पहले ही बोला था डोंट थिंक इट इज समथिंग रिलेटेड टू हिंदुइज्म इट इज यूनिवर्सल व्हाट वी आर टॉकिंग एंड दिस इज द पर्पस ऑफ राइटिंग दिस बुक I think 4 names we will do tomorrow and we'll try to, not tomorrow, not possible to finish this chapter tomorrow, maybe 2 days. So let us wind up here only and let us contemplate, let us sit in silence for 2 minutes and recall what we read today and what are the lessons that we have to learn from today's teachings. So हमारी life में understand that yes, this lifetime, whatever I'm going through, this is tapasya and definitely Hanuman will be born. But what we need patience, we need lot of reverence, we need lot of faith, right? So devotion, reverence, faith, patience, ये सब हमें अपने अंदर डेवलप करना है समटाइम्स हमारी लाइफ में कुछ ऐसा चल रहा होता है उसमें डिलेज होते जा रहे or sometimes you feel you are stuck at one particular point and nothing is moving but उस एक situation में भी एक blessing छुपी है so let us wait for that blessing and अपना कर्म करते जाना है अपने कर्म को नहीं रोकना है carry on with whatever you are doing and follow the virtues let us live a virtuous life let us work on letting go of our vices then definitely Hanuman will be born in our life. So let's close our eyes, let's contemplate on all these teachings. Yes, let's go through all the challenges we are facing in our life during this time. Okay, what you are going through, this is my tapasya. I'll handle this situation with lot of patience. I'll try to understand what is this challenge, what is this trying to teach me. I'll definitely overcome it. I'm grateful that this particular karma is getting neutralized. And my Guru is there, always with me. My Isht is there, always with me, holding my hand, showing me the path, showing me the right direction on which I have to walk. Just be aware of your Ajna Chakra, center of your eyebrows. This is the place where our Guru stays. So just feel the presence of a light in your Ajna Chakra, center of your eyebrows. Please show me the path. Let's talk to our Guru. Please show me the path. Show me the right direction. And please help me so that I'm able to go through this path strongly with lot of strength, with lot of patience, with lot of devotion, and with lot of love and compassion for the people who come along on this path with me. Thank you for showing me this path. Om Guruve Namah. Om Guruve Namah. Om Guruve Namah. Inhale deeply. Accept the blessings of your Guru. Exhale. Materialize, visualize all these teachings are reaching each and every cell of your body. Every chakra is filled and you are blessed.
With this blessing, smile. Slowly and gently open your eyes. Atma Namaste, everyone. I salute the divinity within each one of you. जो ऐसी बातें करते हैं ना कि गर्ल शुड नॉट, फीमेल शुड नॉट वर्शिप हनुमान जी, उनको इग्नोर कर दो, इग्नोर कर दो। बिकॉज हनुमान जी, सबसे पहले अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। वो ये कहना चाह रहे हैं कि हनुमान जी एक ब्रह्मचारी हैं और जो एक फीमेल है उनको हनुमान जी के पास नहीं जाना चाहिए। दिस इज द कंसेप्ट। अब हमारा कंसेप्ट क्या है? हनुमान जी ब्रह्मचारी क्यों हैं, पहले ये समझना बहुत जरूरी है। वाई वी से हनुमान जी इज ब्रह्मचारी? बिकॉज ही स्टेज इन द सुषुम्ना नाड़ी, एंड जो भी हमारा काम, जो भी डिजायर्स हैं, वो एट्रीब्यूट्स किसके हैं? या ईड़ा के या पिंगला के? अब वो ईड़ा पिंगला में रहते ही नहीं है, वो रहते ही सुषुम्ना नाड़ी में है। तो वहां पर वो जो एनर्जी है उसकी जगह ही नहीं है। दैट इज वाई ही इज द अल्टीमेट ब्रह्मचारी। राइट? क्लियर ये कंसेप्ट? राम कौन है? इज द सुप्रीम पावर। अब आप इनको राम भी कह सकते हैं, आप इनको वाहेगुरु भी कह सकते हैं, आप इनको अल्लाह भी बोल सकते हैं, आप इनको शिव जी भी बोल सकते हैं। ऑल आर वन। मैंने उसका नाम, मैं उसको राम बोल रही हूँ। आप उनको, आपने अपने आपके जो अल्टीमेट कॉन्शियसनेस में आप जिसको मानते हो, आप उनको विजुलाइज कर सकते हैं। आप हनुमान जी को हनुमान जी ना विजुलाइज करके आप हनुमान जी को एक ऐसी एनर्जी विजुलाइज कर सकते हैं जो आपकी सुषुम्ना नाड़ी के अंदर आपकी ब्रेथ को ऊपर की तरफ राम के पास लेके जा रहे हैं। हु इज द वन हु इज टेकिंग योर एनर्जी फ्रॉम द कुंडलिनी एनर्जी टू योर सहस्रार थ्रू द सुषुम्ना नाड़ी? ही इज हनुमान। अब ऐसा कैसे हो सकता है कि सिर्फ जो मेल्स हैं उन्हीं की कुंडलिनी ऊपर जा रही है और हनुमान जी की फीमेल्स में वो कुंडलिनी नहीं होती? अगर ऐसा नहीं होता तो मैं ये जो भी हैं हुएवर मिस्टर शुक्ला, मैं उनके साथ एग्री करती। लेकिन मैं उनके साथ एग्री नहीं कर रही हूँ क्योंकि उनका कंसेप्ट लिमिटेड टू माइंड, वो दिमाग से सोच के कर रहे हैं। सो इफ यू थिंक फ्रॉम अ हायर पर्सपेक्टिव, जो मैंने आपको बताया, दैट इज द ट्रूथ। तो हनुमान जी तो सबके अंदर ही है। हनुमान जी हर एक के, हम सबके अंदर है। आप उनको हनुमान जी की तरह देखो या आप उनको ब्रेथ की तरह देखो, हम लोग उनको हनुमान जी बोल देते हैं। वो हनुमान जी कहते हैं कि वो तो हनुमान जी वो हैं जो ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। ठीक है? सो दिस इज द डिफरेंस। मैम पीरियड्स में भी बोलते हैं ना, जैसे कि लेडीज को हनुमान चालीसा नहीं पढ़नी चाहिए या तो सुंदरकांड का अगेन, पाठ नहीं करना चाहिए। पीरियड्स में क्या हो रहा है? पीरियड्स में ये हो रहा है कि जो हमारी अपान वायु है, अपान वायु इज द वायु दैट टेक्स केयर ऑफ द लोअर चक्रास। ठीक है? तो प्राण वायु का जो फ्लो होता है ना, वो डाउनवर्ड हो जाता है बहुत। इसलिए जब पीरियड्स आते हैं तो फ्लो ऑफ ब्लड इज डाउनवर्ड्स। ठीक है? तो वो डाउनवर्ड फ्लो के कारण जो है वो ब्लीडिंग हो रही है। क्या है, जब हम लोगों ने एनर्जी, कोई भी पूजा पाठ करते हैं, उसमें क्या होता है कि कुंडलिनी एनर्जी जो है पूजा पाठ करने से ऊपर जाती है। तो वो जो व्यान वायु है, जब हम ऐसी साधना करते हैं तो ऑटोमेटिकली उसका जो मूवमेंट है वो अपवर्ड हो जाता है। कई बार हम डेलिबरेटली भी करते हैं क्रिया योगा से, कई बार वो ऑटोमेटिकली ऊपर की तरफ, क्योंकि कुंडलिनी एनर्जी ऊपर की तरफ मूव करेगी। सो वो जो ब्लीडिंग हो रही है, वो जो एनर्जी है, वो टॉक्सिन्स रिलीज हो रहे हैं बेसिकली। ठीक है? दैट इज नॉट अ हेल्दी दिस थिंग। सो इस वजह से हम उन दिनों में कोई भी मेडिटेशन या कोई भी साधना नहीं करते हैं until and unless we are doing some तांत्रिक साधना। ठीक है? जैसे माँ कामाख्या की साधना है, माँ कामाख्या की साधना करेंगे तो वो पीरियड्स में करना अच्छा होता है। राइट? बट दिस साधना डेफिनेटली व्हेन द कुंडलिनी इज मूविंग अप, सो द दैट वो जो उसमें जो टॉक्सिन्स रहते हैं वो ऊपर के चक्रास में मूव नहीं करें, इस वजह से प्रॉब्लम हो जाती है। इसलिए पीरियड्स के दौरान ये सब नहीं करना चाहिए। अगेन, हर चीज का लॉजिक पकड़ना है, सुपरस्टिशन कहीं नहीं रखना है। जहां पे लग रहा है ना कि इस चीज का लॉजिक आपको समझ नहीं आ रहा, डोंट डू इट।
वही रिचुअल करो, वही पूजा पाठ करो, वही साधना करो जो आपको पता है कि इसके बिहाइंड साइंस कहाँ काम कर रही है, राइट? मैम ठीक है, जैसे पीरियड्स में हम मेडिटेशन नहीं करते या हम पाठ भी नहीं करते, लेकिन कई बार जो मंत्र चैंटिंग या जाप हमारा होता है वो तो ऑटोमेटिकली चलता ही रहता है उस टाइम पे भी, तो वो तो हम कर सकते हैं ना कि हाँ हाँ, कर मतलब। सकते हैं। जो ऑटोमेटिक अजपा जाप अगर आपके अंदर चल रहा है ना, अब वो फिजिकल या एथरिक बॉडी में नहीं है, ओके। वो आपकी सटल बॉडी में चल रहा है, तो वहां पर ये सब नहीं हो रहा, बट मेक श्योर इट इज इन योर सटल बॉडी। हाँ जी मनप्रीत। आत्मा नमस्ते। आत्मा नमस्ते। आपने जो भी बात बोली ना कुछ दिन पहले, मेरे घर में जो हेल्पर हैं, मैंने उनको बोला था कि आई एम जस्ट गोइंग समवेयर, तो आप पूजा वाली स्थान आप आज क्लियर कर दो। तो उन्होंने मुझसे बोला मुझे पीरियड्स हो रहे हैं। तो मेरा ना मन माना नहीं। मैंने कहा पता है क्या, आप कर दो, इट्स ओके, कोई बात नहीं। बट वो मेरे अंदर में ना एक डाउट आया। तो जब हम ये तो हम लॉजिकली है कि वो एनर्जी हमारी जो है डर्टी एनर्जी ऊपर को जाएगी, तो क्या ये सेम चीज हम पूजा स्थान पे रख सकते हैं? कि मतलब मेरा दिल नहीं करता कि हम ना उस दिन क्लीन करें। तो क्या नहीं, ये सुपरस्टिशियस है क्योंकि या लॉजिकल है? हाथ लगाना इसलिए होता है क्योंकि अगेन व्हेन यू एक्चुअली लुक एट अ deity's picture, if you connect to that, थोड़ा सा पार्ट ऑफ योर कुंडलिनी राइजेस। सो कुछ ना कुछ इसीलिए अवॉइड किया जाता था। मंदिर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम्म, और दूसरा, दिस इज वन पॉइंट, दूसरा पॉइंट इज बिकॉज बॉडी इज रिलीजिंग टॉक्सिन्स, तो ऑरा इज लोअर, ऑरा इज नॉट सो क्लीन दैट टाइम, एंड वो शुद्धता मेंटेन करने के लिए दिस इज अनदर रीजन। तो वी शुड एक्चुअली नॉट क्लीन इट बेटर, पर्सनली, अगर बेटर। कोई ऑप्शन नहीं है वर्स्ट, बट वरना हमें अवॉइड करना चाहिए लॉजिकली Yes, बिकॉज ऑफ दिस रीजन। yes, yes. As थैंक pranic यू। healers, we know the consequences of Kundalini syndrome. So Kundalini syndrome हो जाता है फिर, बिकॉज वही डर्टी थैंक एनर्जी ऊपर मूव करेगी ना, तो जहां चक्रास में फिर वो कुछ ना कुछ कहीं पे भी ब्लॉकेज है, वहां पर फिर वो डर्टी एनर्जी मूव करेगी, दैट इज व्हेन आवर चक्रास गेट डर्टी। सो दिस इज द रीजन। थैंक यू। So let's wind up today's session here only. See you all tomorrow at 12:30 p.m. Atma Namaste everyone. Ram Ram. थैंक यू श्वेता जी, राम राम। Thank you Sadhna ji for the beautiful राम राम sari. जी। Yeah, welcome. I'm happy that you'll be able to use it for Guru Purnima Yeah, at I'll least. definitely wear it and send you the picture. Thank you. Thank you. Atma Namaste. Blessings to all of us. Yeah. Atma Namaste.